सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ नवमोऽध्यायः। Yudhishthira and others call on Bhishma and the latter drops his mortal coil extolling Sri Krishna. போன அத்தியாயத்தில் எப்படி குந்தி ஸ்துதி வந்ததோ அதே மாதிரி ஐ திங்க் இந்த அத்தியாயத்தில் பீஷ்மஸ்துதி பீஷ்மஸ்துதி வரும். ஓகே, ஸோ இதி பீத பிரஜாத்ரோஹத் சர்வதர்ம விவத்சயா ததோ வினசனம் பிராகாத் யத்ர தேவவ்ரதோபதத் ததா தே பிராதரः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन्द्रतैर्विप्रा व्यासदौम्या दयस्तथा भगवानपि विप्रशेस्तेन सदनञ्जयः स तैर्व्योरचत नृपः कुबेर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुघासः चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रपदमधिस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मारातादयो मला शिष्यैरुपेता आजग्मो कश्यपाङ्गेरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहं पाण्डुपुत्रा नोपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् रागास्त्रैरन्दीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोऽन्यायं यद्योऽयं धर्मनन्दन जीवितुं नार्हत क्लिष्ट विप्रधर्माच्युताश्रया संस्थिते तिरते पाण्डो पृताम्बालप्रजावधूः युष्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशो लोको वयोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापानिर्वृकोदर कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विदेत्सवं यद्विजिज्ञास्या युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं यस्य भरतर्षभ तस्यानो विहितो नातः पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गुढचरितवृष्णिशो अस्यानुभावं भगवान् देवगुह्यतमं शिवः देवर्षिनारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादात सारथिं सर्वात्मा समदृशो
ह्यद्वयस्यान हङ्कृते तत्कृतम् अतिवैषम्यं निरवध्यस्य च क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मिभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं हासारुणलोचनोल्लसन् मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छ द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्यां माम्नातेभ्य लक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागश स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगत धर्मार्थकाममोक्षांश सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् प्रवधतस्तस्य सकालप्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द मृत्योर्वा चितस्तोत्तरायणः तदोपसंहृतं गिरं सहस्राणि विमुक्तसङ्गामन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यता निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकिरगौरवराम्भरं ददाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयसकेरतिस्सु मेनवध्याम् युदितुरगजो विधूम् अवृष्वकचलुलितश्रम वार्यलङ्कृतास्ये मम निशितरवैर्विभिद्यम् आनत्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थसखेरतेर्ममास्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरतिपरमस्य तस्य मेस्तो स्वनिगममपाहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतोस्ततस्ता धृतचरणोऽभ्ययाचलद्घो हरिरिविहन्मुहन्तुमिभं गतोत्तरीयः श्रुतिविशिखहतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मध्वधार्तं स भवतु
भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयर शिमनितच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहता गता स्वरूपं ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदे ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष विरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोह सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोदृष्टे वृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभ्यो नेदो देवमानववादितः शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतो पुष्टवृष्टयः तस्य निर्हरणाधीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् परययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमेदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्य प्रलम्बो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।